Hi there. I'd like to show you how to dynamically create images using an API by using PHP, the gdlib2 and qrserver.com as the API. Something about me. That's me. My name's Alex. You can follow me on Twitter if you like. I participated in this year's Spreadshirt API contest in early summer 2011. And what I did is a little shop where you can buy t-shirts with QR codes on. And these QR codes are taken from an API and they're mixed with background images by using PHP. So I will not tell something about the Spreadshirt API because I think you can read a lot about that on the web. And for me, working with APIs is remixing the web. So you take something that is already there, like the Spreadshirt API, and you throw something in that you created by yourself, like the image we're going to create, and you get something new. That's what I like about it, and that's why I'm an API junkie. So this is what we're going to create, a little warning sign with a QR code on it. And here's the plan how we're going to do it. We first need a container, an empty container that can hold all the stuff we want to put in. And then we're going to first put in the background, and to make it tasty we're going to put in the QR code. So we're gonna paste the QR code onto the background. If you want to take a look at what I did, take a look at qrcodeshirt.de. I hope it's gonna be up in a few days. So let's get started. I'm gonna open Notepad++, my favorite editor, and I already created a folder called I'm sorry, I have a bit cold. A folder called QR demo. And here's a picture called background.png. So this is what our background looks like. It's 500 by 550 pixels. And let's start with a new file. I'm gonna save this as index.php. So let's open PHP. First thing we have to do is we have to tell the browser that it has to render this file not as an HTML file but as an image. So we have to send a header, and we have to set the content type to an image of type PNG. So our first plan was let's create this empty container. This empty container is going to be an image object in PHP. So let's call it image container, and let's call the function image create true color. So with this we're going to create a new true color image. This one wants to have the pixel measurements, so it's 500 by 550. Our image container has to be transparent, so we also have to call a function on this image object called ImageSaveAlpha. ImageSaveAlpha wants to know which image we want to make transparent, so we take our image container and we set the function to true, so our image can work with transparency. Now the next thing we have to do is a little bit odd. If we want our complete image to be transparent in the background, we have to fill it with transparency. So first thing we have to do is we have to create a transparent color. Let's call this alpha color, and the function to create a transparent color is image color allocate alpha. So first it wants to know for which image we want to create it. We want to create it for image container. Then it needs 3 values for RGB. In our case, it doesn't matter which values these are because it's going to be completely transparent. So I can take 0, 0, 0, and it wants to know the alpha value. This is going to be 127, so highest alpha. So it's going to be completely transparent. Next, we have to fill the image with the color we just created.
The function for this is image fill. Then it wants to know which image, or image container. Then it wants to know where to start at the XY axis. So it's going to start at 0, 0, and then which color to use. So our alpha color. Okay, so our container is ready. What we can do now, we can render this image we just created. So we call image PNG, and then give this function the image we want to render. Again, it's our image container. Now if we call this in a browser, let me open Mozilla. Let's go to localhost QR demo. You see nothing, but you can tell by the header that this is a PNG image with 500 by 550 pixels. You can't see anything because it's completely transparent. But if I mark it, you can see it's there. Okay. So next thing we want to do is we want to paste in the background. Our background is the background.png in the same folder as our script is. And to call this, we first again create an image. We create it from a file, and then we copy it onto our image container. So let's call this background. Now let's create an image object. Image create from PNG. That's the function to create it. And this wants to know from which file we want to create it. We want to create it from background.png. Now let's copy this onto our image container. We do this by calling image copy resampled. Using image copy resampled makes it very smooth. If you use just image copy, it's gonna not look very cool. So first it wants to know where to copy it. We want to copy it onto our image container. Then it wants to know what to copy. We want to copy our background. Then it wants to know where to position it at 0, 0. Then it wants to know where to start the image, also at 0, 0. Then it wants to know where to end the image at 500 by 550. And then again it wants to know the size of the image. That's also 500 by 550. Okay, let's take a look at the browser. And here it is. This is our script, and it contains exactly the background URL, the background.png we have in our folder. Okay, now we come to our QR code. The QR code we use is taken from qrserver.com. They have a really simple and really great API. So let's take a look at there. qrserver.com. If you are there and you're gonna plan something big, take a look at the premium services. They really rock. So here's the free API. I'm gonna use this, and what you can do there is you can call simply a URL where you give a size and you give the data that should be rendered onto the QR code. Okay, now let's create the image. Let's call it QR image, and this is also made with image create from PNG, because we get a PNG image from QR server. And now let's paste in the URL we need. So 150 by 150 is not big enough. We want it to be 265. Okay, and for the data, I'm gonna put in my my Twitter profile. Here it is already. Okay, so this is the URL for the image we want to use. Let's bring this in here.
Great. And now again let's copy this image onto our background image. So again we use image copy resampled. This time we're not going to use background as the file as the image object we want to copy. We're going to use QR image. And now what we have to say is the image is going to end at 265 pixels, and the size is also 265 pixels. Okay, let's take a look at this. Let's reload. Now the QR code is already here, but it doesn't look very good. We have to position it somewhere in the middle, around here, and we have to get rid of this white background you can see. Now first for the positioning. By using image copy resampled, we can say where the image should start. So ideal would be 115 and 150. So it starts at 115 and 150 and it's gonna make the image this big. So let's have a look. This looks pretty good. Before I will go on, I have to start the screencast, to stop the screencast for a moment, and we will go on in part 2. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, onlineustad.com की जानिब से अब्दुल वली आपकी खिदमत में हाजिर है PHP की ट्यूटोरियल्स के साथ। दोस्तों, PHP की हमारे ट्यूटोरियल जो है वो फाइल अपलोडिंग के हवाले से थी, और इसमें हमने 3 वीडियोस में सीखा कि हम किस तरह स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं उसके लिए कि हम फाइल्स उस पर अपलोड करें और उसके टाइप मालूम करें, उसका साइज़ जो है उसको वैलिडेट करें। ठीक है, तो वही जो है पेज मेरे पास यहाँ पर ओपन है, और अभी जो हमारा लास्ट जो है वो ऑप्शन है वो है इस फाइल को हमने सेव करना है कहीं पर, क्योंकि फाइल बेसिकली अभी बिल्कुल टेम्परेरी मूड में है और ये जस्ट अपलोड हो रही है, लेकिन इसको हमने अभी तक जो है कि कोई रास्ता नहीं बताया कि वहाँ पर ये फाइल जाके सेव हो जाए। ठीक है, तो करना क्या है हमने कि इस फाइल को हमने अपलोड करना है अपने ये फाइल अपलोड होगी और हमारे पास ये फाइल आएगी इस फोल्डर के अंदर, जो कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा फोल्डर है यहाँ पर उसका शॉर्टकट हमने बनाया हुआ है। ये जो htdocs के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर है, ठीक है, ये फोल्डर इस वक्त आप इसके अंदर जो है सिर्फ एक फ़ाइल की जो हमने फ़ाइल बनाई है अभी PHP की, ठीक है, यानी file.php की हमारी फ़ाइल है ये वाली जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये फ़ाइल मौजूद है और हम इस जो है इमेज हम अपलोड करेंगे उसको हम कोई ना कोई जगह बताएंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही जगह बता देते हैं, यहीं पर ये पिक्चर जो है अपलोड होगी। ठीक है, करना क्या है कि ये फाइल अगर 50 KB से कम है तो यहाँ पर इक्को की इस इक्को को जो है हम जस्ट ये चेक कर रहे थे कि ये काम कर रहे हैं या नहीं। अभी इसको हम डिफ़ॉल्ट जो है एक फंक्शन है PHP का फाइल को अपलोड करने के लिए, वो हम यूज़ करेंगे, उसका नाम होता है मूव। ये मूव लिखते हैं हम, उसके बाद जो अंडरस्कोर लगाते हैं और फिर लिखते हैं अपलोडेड। ठीक है, और उसके बाद फिर अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो फंक्शन है PHP का। उसके बाद ये पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये वेरिएबल देते हैं जो कि हमारे पास यहाँ वेरिएबल था। ठीक है, TMP के नाम से, ठीक, TMP, और इसके बाद जो है कॉमा लगाते हैं, फिर जो है नेम, यानी कि जो नेम का वेरिएबल है ये हम कह रहे हैं कि भाई ये दोनों फाइल्स और एक सेमीकोलन, ये टेम्परेरी जो फाइल है ये नेम वाला, ठीक है, इसको मूव कर दो, यानी इसको अपलोड कर दो। ठीक है, तो कहाँ पर अपलोड करेगा, इसी फोल्डर में अपलोड करेगा जहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, और हम इसको इक्को भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्को भी करके हम इस यूज़र को इसको वहीं पर शो भी कर सकते हैं, जो पेज हमारे पास यहाँ मौजूद है हमारे ब्राउज़र में, ये पेज, इस पेज पर हम शो भी कर सकते हैं वापस। ठीक है, अगर शो हम ना करना चाहे तो भी कोई मसला नहीं है। ये नहीं, मिसाल के तौर पर हम जस्ट अगर सिर्फ कहे कि फाइल वाज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है,
तो ये मैसेज भी हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस मैसेज को अगर मैं थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहूँ तो HTML का टैग में इस्तेमाल कर सकता हूँ। कलर रेड, फ़ॉन्ट साइज बल्कि कलर रेड कर देता हूँ जस्ट, और फ़ॉन्ट क्लोज। तो ये फ़ाइल जो है अपलोड हो जाएगी हमारे इस फोल्डर के अंदर। ये फोल्डर अभी आप देखिए फोल्डर खाली है, ठीक है। इस फाइल के अलावा इसमें यहाँ कोई फाइल नहीं। लेकिन इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। 32 नंबर पे कोडिंग में एरर है। एको फॉन्ट वाज सक्सेसफुली, अच्छा यहाँ पर एक सेमीकोलन रह गया है। सेमीकोलन लगाया और कंट्रोल एस किया। सेव करना होता है आपने जो चीज़। लाइन नंबर अनएक्सपेक्टेड एल्स, ठीक है। एल्स echo size of the image is larger than this and that। ओके जी, यहाँ पर क्या करना है हमने कि वो हमने नहीं लगाया जो कि हमें लगाना चाहिए था। दो जो है पैरेंथेसिस हमने लगाने हैं, जिसमें यहाँ पर जो है पैरेंथेसिस लगाना है, क्योंकि एफ के बाद जो ये दो पे जो कर्ली ब्रैकेट्स है, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, ये कर्ली ब्रैकेट्स हमने लाजमी लगाने होते हैं। ये मैं भूल गया था क्योंकि इसके अंदर ये एक्शन हो रहा होता है, ठीक है। दोबारा कंट्रोल एस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आके एंटर कर दिया तो ये आ गई हमारी फाइल। स्क्रिप्ट वापस अपने राह पे रवा दवा है। चूज़ फाइल पे जाके, ठीक है, एक फाइल जो है वो ऐड करेंगे। मिसाल के तौर ये वाली फाइल, ठीक है, तस्वीर है। और इसको चेक करते हैं कितने KB की है। 76 KB की है। अगर इसको हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ये साइज़ जो है लार्जर 50 KB। तो लाजमी बात है एरर देगा अगर आप कोई बंदा जो है इससे ज़्यादा का फाइल अपलोड करेगा। तो हम बेसिकली एक ऐसी तस्वीर जो है वो ऐड करेंगे जो कि 50 KB से कम होगी, ठीक है। ये भी 53 KB है। ये पिक्चर देखते हैं कि ये कितने KB की है जी। ये 27 KB की है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फाइल वाज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये इसको अच्छा जी, अभी जैसे मैं इस फोल्डर पे आता हूँ तो फोल्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो आ गई है, जो कि हमने अभी अभी अपलोड की थी। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इस मैसेज को अगर मैं सेंटर पे कर दूँ तो सेंटर पे भी मैं कर सकता हूँ इसको सेंटर, और यहाँ से आखिर में मैंने इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस, यहाँ पर दोबारा एंटर कर दिया। अब दूसरी कोई फाइल अगर आप ऐड करना चाहें, देखो वो पिक्चर ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास सेव हो गई है। मिसाल के तौर पे ये बच्चे की तस्वीर है एक। इस पिक्चर को, हाँ, 31 KB की है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद अपलोड फाइल, तो नीचे लिखा हुआ है फाइल वाज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अपने इस फोल्डर में आ जाए, जिस फोल्डर में हमारे पास फाइल थी उसमें एक और पिक्चर का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो दो पिक्चर जो है हमारे इस फोल्डर में अपलोड हो गई। और सेम टू सेम ये तरीका होता है आपका ऑनलाइन वेब सर्वर पे, जहाँ पर आप इसी तरह का एक वो दे देते हो। अच्छा, अगर अभी आप ये तस्वीर यहीं पर शो करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर इस पेज पे यहाँ पर इस मैसेज की जगह, तो भी शो कर सकते हो। इसके लिए जस्ट आपने ये करना है कि ये तो हमारा मैसेज हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इमेज अपलोडेड, 1 मिनट, BR कर देता हूँ, ठीक है। BR मैंने लगाया और मैंने कहा अपलोडेड इमेज इज हियर, ठीक है। और एक अच्छा जी, इसके बाद जो है BR और यहाँ पर IMG का टैग लगाया मैंने, IMG, क्योंकि एको के अंदर जो है आप एको कमांड के अंदर आप कोई भी HTML का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं टैग, ठीक है। सोर्स मैंने दिया और यहाँ पर जस्ट मैंने वो नेम जो है वो ऐड कर जो नेम है वो मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और ये इसको मैंने क्लोज कर लिया। ये जो नेम होता है ना, इसका जो फाइल है हमारे पास, जो नेम टेम्परेरी फाइल, जो फाइल आ रही है हमारे पास, वो यहाँ पर हम अभी शो हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। इस फाइल को दोबारा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर जाके कोई भी फाइल हो जो कि 50 KB से लेस देन 50 KB हो, मिसाल के तौर पे ये इमेज है, बिल्कुल ये 49 KB है। ओपन कर लेते हैं और अपलोड
ठीक है। एक कह रहा है कि नहीं ये तो ज़्यादा है, जी बिल्कुल ये ज़्यादा है, 51 के भी वहाँ पर तो ये खैर कम शो कर रहा था, लेकिन बेसिकली ये पिक्चर बड़ी थी, ठीक है। इस पिक्चर को देखते हैं, ये तो बहुत बड़ी है भाई, ये कंप्यूटर की पीसी की पिक्चर को देखते हैं, ये ठीक है, ठीक है। इसको आप वो कर दिया और उसके बाद अपलोड कर दिया। जैसे मैंने अपलोड किया तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि फाइल वाज सक्सेसफुल अपलोडेड सक्सेसफुली, अपलोड इमेज इज़ हियर, ठीक है। ये है आपका इमेज। और दोबारा जाए कि कोई और फाइल अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो भी इस तरह आ जाएगी। इस पिक्चर को मैंने अपलोड करता हूँ, मलाला यूसुफजई, अपलोड फाइल पे करता हूँ, तो ये आपका इमेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और हमारे फोल्डर में भी ये इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। अभी इमेजेस हम बहुत आसानी के साथ मतलब है कि ऐड कर रहे हैं अपने सर्वर में भी, और यूज़र जो हमें मतलब है कि जो हमारे यूज़र्स है वो जो पिक्चर्स अपलोड करेंगे वो हमारे जो सर्वर में जो हमारा फोल्डर होगा इमेजेस के नाम से, उसमें जो ये तस्वीरें अपलोड होती जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जो है हम अपने PHP की कोडिंग करेंगे अपने सर्वर के अंदर भी, ठीक है। अपने सर्वर में जाके वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर हम चाहें तो हम अभी हमारे पास जो इमेजेस हैं उनको हम ये भी एक क्यूरी उस पर लगा सकते हैं कि अगर पहले से कोई तस्वीर मौजूद हो, ठीक है, तो उसकी भी एक क्यूरी हम लगा सकते हैं कि कैसे क्यूरी होती है वो। और ये नहीं कि एक पिक्चर अगर हमारे पास एक नाम से पहले से मौजूद है तो वो पिक्चर भी हम जो है उसको हम बता सकते हैं यूज़र को कि पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो आप बराए मेहरबानी दूसरी पिक्चर जो है वो अपलोड करें। उसके अलावा हम इसके ऊपर ये भी कंडीशन लगा सकते हैं, हम अपनी तस्वीर जो होते हैं उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जो भी कोई फाइल बंदा अपलोड करे उसको रेंडमली कोई अपना नाम भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसी वीडियो के दौरान मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट हो एक पिक्चर, तो उसको हम कैसे जो है वो करेंगे, यानी कि उसका जो नाम का अगर पिक्चर पहले से मौजूद है तो उसको हम कैसे यूज़र को बताएंगे कि ये पिक्चर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक। जी व्यूअर्स, ये टाइम की बचत के लिए मैंने जो है थोड़ा सा जो है वो किया, मैंने थोड़ा सा मतलब है कि टाइम की बचत के लिए मैंने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट मैंने जो है वो लिख ली है। इफ़ की फाइल एग्जिस्ट जो है ये एक डिफ़ॉल्ट कमांड है, ठीक है। और ये जो फाइल मैंने अभी जो मतलब डिफ़ॉल्ट कमांड है फाइल एग्जिस्ट का, ठीक है। और ये जो पिक्चर्स है हमारे पास, ठीक है, इन पिक्चर्स को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो अभी ये इस वक्त हमारे पास इस सामने जो है उसमें मौजूद है, ठीक है। तो इनको अगर हम सामने से डिलीट कर दें, यानी कि सामने उसी यही जो फाइल है वही पर हमारे पास ये इमेजेस भी आ रही है, तो ये अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। इसलिए मैं इन फाइल्स को, ये जो इमेजेस हमारे पास आ गई हैं, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ जनाब कि यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ इमेजेस का, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगेगा क्योंकि हमारे पास एक जो ये फाइल है और दूसरे इमेजेस का फोल्डर है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जस्ट हमने जो चेंजिंग करनी है वो ये करनी है जनाब कि जो हमारे पास यहाँ पर जो हमने मूव अपलोडेड फाइल को अपलोड किया था जिस नाम के साथ, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी जो है एक इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और इमेजेस लिख देंगे, ठीक है, और फिर \name, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस छोटी सी चेंजिंग से क्या हो गया कि वहाँ पर ये पिक्चर जो है ये भी इस इमेजेस के फोल्डर में जाएगी। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमने इसको वो किया हुआ है शो कर रहे हैं जो img और सोर्स के अंदर जो है इस नेम से पहले हम क्या करेंगे कि इमेजेस और यहाँ पर \, दे देंगे, ठीक है। जस्ट ये चीज़ हमने की और अभी हम इसको Ctrl+S करके सेव करेंगे। तो इसी तरह ये तो हमने इमेजेस के फोल्डर में अभी जैसे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। 42 में मसला है, 42 else 42 else 50 KB इट्स नॉट। यहाँ पर इमेज भी ठीक है, सब चीज़ें ठीक जा रही हैं। इमेजेस लोडेड ठीक है। अच्छा ये जो है एक मैंने में हमारे पास
मसला कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एल्स, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एल्स को फाइल इज 42, ठीक है, एल्स टाइप इज नॉट अलाउड, जी व्यूवर्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक जो है मसला थोड़ा सा मुझसे हो गया था, एक कर्ली ब्रैकेट जो है वो मैंने इजाफी लगा ली थी, ठीक है, तो वो मैंने हटा दी और कंट्रोल एस करके जो है इस पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर भी रिफ्रेश किया। उसके बाद एक पिक्चर हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं अभी, ताकि ये मलाला यूसुफजई की और अपलोड कर लेते हैं। जैसे अपलोड किया तो अपलोड भी सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो ये इमेजेस का फोल्डर है, ये जो तस्वीर है वो यहाँ पर जो है हमारे पास अपलोड होंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एक पिक्चर को यहाँ पर जो है वो कर लें, फॉर एग्जांपल अपलोड कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मेरी पिक्चर है, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, ओपन अपलोड, ठीक है, पिक्चर अपलोड हो गई। 2-3 पिक्चर्स को हम अपलोड करते हैं PHP की मदद से, ठीक है। बच्चे की पिक्चर है तो इस बच्चे की पिक्चर को मैं चेक करता हूँ जी, ये भी अपलोडेबल है, साइज इसका कम है, ये पिक्चर आ गई, ठीक है, यहाँ पर भी शो हो रही है। और हमारे पास जो ये इमेजेस का फोल्डर है इसमें पिक्चर्स अभी 3 हो गई है, ठीक है, यानी कि हम पिक्चर्स ठीक तरीके से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक टाइम की बचत के लिए जो मैंने ये स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा, जो ऐड किया मैंने, इफ़ फाइल एग्जिस्ट का जो है डिफ़ॉल्ट जो है एक कमांड है PHP का कि ये ऑलरेडी जो है फाइल कोई मौजूद होती है तो उसको चेक करता है, ठीक है। तो हमने इसको फोल्डर का नाम दिया जो आगे के पैरेंथेसिस है उसमें कि भाई इमेजेस का फोल्डर हमारे पास इसी जगह पे मौजूद है, उस फोल्डर में जाके देखो। ये हमने कैनकेटिनेशन की है, ठीक है, इमेजेस के फोल्डर को हमने के साथ हमने कैनकेटिनेट किया। फाइल्स जो कि हमारा एरे है सुपर ग्लोबल, और उसके अंदर हमारे पास एक फाइल की जो फील्ड है उसके अंदर जो है नेम, जो हमारे पास नेम की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास आ रही है। एक जो ये अपलोड का बटन है इसमें ऑलरेडी हमारे पास जो एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू हमारे पास आ रही है हम इसको बता रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो इको में हमने क्या कहा कि इको इसी के अंदर जो ये यहाँ पर ये हमने एग्जिस्ट किया है कि आगे मत बढ़ो फिर, ठीक है, आगे मत बढ़ना है। एग्जिट का मतलब होता है कि यही से आपने स्किप करना है, वापस आना है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो फिर ये मैसेज दिखाओ इको दिस फाइल, और ये हमने नेम दिया कि उस फाइल का नाम होगा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ से हम BR कर देते हैं, प्लीज ट्राई अनदर वन, ठीक है, अनदर वन। कंट्रोल S करके सेव करते हैं और उसके बाद यहीं पर आके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो ये वो इमेजेस वगैरह गायब है। अभी यहाँ पर आके मैं एक पिक्चर जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने सर्वर पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये पिक्चर जो है जो 40 के नाम के साथ से मेरी पिक्चर, तो इसको मैं दोबारा अपलोड कर लेता हूँ और अपलोड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि दिस फाइल 000.jpg इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अनदर वन, ठीक है। तो अब हमारा जो यूज़र है वो मल्टीपल फाइल, जैसे कि ये 14 अगस्त वाली पिक्चर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, अपलोड करता हूँ तो ये कह रहे कि द फाइल दिस फाइल 14 अगस्त उसका नाम आ रहा है, उसके बाद GPG इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अनदर वन। तो ये पिक्चर जो है उसको वो नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये जो है अपलोड नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये यूज़र। हाँ, कोई और फाइल होगी तो वो लाजमी तौर पर जो है उसको ऐड कर सकेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक पिक्चर है, ये तो बड़ी पिक्चर है, बड़ी है पिक्चर, मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर जी, ये पिक्चर ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो ये अपलोड हो जाएगी। इसको मैंने पहले चूज़ किया और उसके बाद अपलोड, ये पिक्चर अपलोड हो गई सक्सेसफुली, फाइल वाज अपलोडेड सक्सेसफुली, अपलोड इमेजेस हियर। और यहाँ पर आके अपने फोल्डर में आते हैं तो फोल्डर में भी अपलोड हो गई है। लेकिन अगर ये जो पिक्चर्स है अगर इनको आप दोबारा अपलोड करेंगे तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट है इसके अंदर इफ़ का ये काम कर जाएगा और ये फाइल को आने नहीं देगा और आपको एक मैसेज दे देगा कि ये पिक्चर हम अपलोड नहीं कर सकते, पिक्चर हम नीचे पर अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो भी एरर आएंगे उसके लिए हमने एल्स की कमांड्स रखी है कि अगर
एक पिक्चर जो है उसका साइज़ ज़्यादा हो तो उसको ये मैसेज दो, एल्स टाइप अगर ख़राब हो तो ये मैसेज दे दो। और ये सारा काम हम इस वाले एफ़ के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे पास एफ़ है टाइप वाला, ठीक है, सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर रहे हैं। ये जो है एफ़ अलग है और उसके बाद जो सारा काम हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है, क्योंकि इसका ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और ये ब्रैकेट जो है, जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट है और ये कर्ली ब्रैकेट बेसिकली यहाँ पर बंद है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और एल्स है, वो ये है कि अगर टाइप जो है वो वैलिड नहीं होगी तो भी ये मैसेज आएगा। इसके अलावा हम जो ये हमारा पूरा खुलासा है वो ये है कि हमने पहले HTML का एक सिंपल सा फॉर्म बनाया। फॉर्म के बाद हमने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए और इफ सेट की मदद से हमने इसको जाना कि अगर ये सबमिट का बटन प्रेस हुआ हो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर ये खाली हो तो एक क्यूरी हमने यहाँ पर लगाई। हमने कहा कि अगर ये खाली हो इफ की मदद से, कि अगर नेम का जो फील्ड है उसमें अगर खाली हो, कोई चीज़ नहीं हो, तो फिर आप जो है क्या करें कि प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कि पहली जो है आप फाइल जो है वो लाजमी सेलेक्ट करें। और हमने एग्जिट की कमांड इसीलिए लगाई क्योंकि एग्जिट का मतलब होता है कि फिर आगे का स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट ना करो, यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। और उसके बाद हमने टाइप को चेक किया। हमने 3 टाइप्स दिए। हमने कहा कि गिफ हो, जेपीजी हो या पीएनजी हो तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि ये तो खैर हमने आखिर में लगाई, ये हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। जो फाइल एग्जिस्ट की कमांड है कि अगर हमारे पास ये फाइल मौजूद हो तो फिर इसको भी ना आने दो, ठीक है। उसके अलावा हमने साइज़ को चेक किया। हमने कहा कि अगर 50,000 जो बाइट्स है यानी कि 50 के पीछे अगर साइज़ कम हो तो फिर उसको मूव अपलोडेड फाइल की मदद से हमने उसको अपलोड किया टेम्परेरी इमेजेस और नेम में। और एक को भी हमने करवा दिया क्योंकि हम पेज पे भी मैसेज भी दे सकते हैं और इस इमेज को भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने यहाँ पर जो एल्स की कमांड्स दी उसमें हमने ये बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी काम कर रही हैं। जस्ट ऊपर एक इंटर कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ें गायब हो गई। आप पे से क्लिक करेंगे तो ये आपको ये देगा मैसेज कि प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम कंप्यूटर। और अगर आप इसमें कोई और टाइप की कोई फाइल जो है वो ऐड करेंगे तो ये फिर भी आपको एरर देगा। मिसाल के तौर पर ये एक्सेल की फ़ाइल है, इस पर आपको एरर दे रहा है कि ये फ़ाइल जो है ये वैलिड टाइप नहीं है और हम जो है जेपीजी, पीएनजी और इमेजेस वगैरह वो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बड़ी साइज़ की फ़ाइल को ऐड करेंगे तो बड़ी साइज़ की फ़ाइल को भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देखो ये आपको बता देगा कि ये बड़ी साइज़ की फ़ाइल है। और अगर आप बिल्कुल ठीक फ़ाइल को ऐड करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको ये जो है वो इजाज़त देगा और ये आपकी फ़ाइल को अपलोड कर देगा, ठीक है। ये अपलोड कर देता हूँ। ये भी बड़ी साइज़ की फ़ाइल है और अगर जो भी मतलब है कि आपके पास ऐसी कोई फ़ाइल होगी जो ठीक रहेगी, आई मीन टू से कि जो वैलिड होगी, तो वो फाइल जो है आपके पास इंसर्ट होगी, बाकी कोई फाइल आपके पास इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्क्रिप्ट आपको लाजमी तौर पर पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी सारा जो है PHP के अंदर ये फ़ाइल है हमारे पास एक बिल्कुल वैलिड है। जैसे क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल यहाँ पर भी आ गई और हमारे पास यहाँ पर भी आ चुकी है, ठीक है। और PHP में काम बहुत तेज़ी से होता है। PHP बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है। अपना आपका काम बिल्कुल सेकंड के जो है 1000वें हिस्से में करके दे देता है, ठीक है। तो इस तरह हम वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, दूसरी फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं और हमने जस्ट क्या करना है, यही कोडिंग जो है अपने सर्वर के अंदर डालनी है। और जो हमने एक साइन अप का फॉर्म बनाया था पिछली वीडियोज़ में, आपको शायद याद होगा, उसमें भी अगर आप इमेज की फील्ड का इजाफा करें तो उसके लिए भी आपने जस्ट यही कोडिंग करनी है, ठीक है। और ये कोडिंग ये तो खैर हमने अलग की है सबके लिए, लेकिन ये है कि ये आप एक साथ भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और भी जो है इसके बारे में तफसील से समझाएं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा इस हवाले से वो होगा ईमेल के हवाले से कि हम PHP के अंदर किस तरह ईमेल सेंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो onlineustaad.com को हमेशा जो है विज़िट कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है आपकी हेल्प के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको हमें दुआओं में याद रखिएगा और लाजमी तौर पर कोशिश करें कि हमारे DVDs में कोर्सेज़ ख़रीदें जो कि तफसील के साथ और तरतीब के साथ होते हैं, क्योंकि आपको एजुकेशन की ज़रूरत है और आपको बहुत मुनासिब कीमत पे बहुत ज़बरदस्त और अच्छी एजुकेशन तमाम चीज़ों की मिलेगी। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।